एक्सेल सर पहले थोड़ा गार्डन मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे. Okay. Yes, sir. Okay. For this, I want to share my screen. So I got the question from a lot of people in the last week that they asked, okay, in my team, people that join with 560 credits and they're buying units, why I don't get commission from these people? एक्सेल सर को बहुत सारे सवाल गए हैं, इंडिया से ही ज़्यादा गए हैं कि मेरे टीम में बहुत लोग 560 से साइन अप हुए हैं और लेकिन मुझे उसका कमीशन क्यों नहीं आ रहा है गार्डन मैट्रिक्स में, तो उसके बारे में जवाब दे रहे हैं. Okay, as we can see here in the payout plan for the garden matrix, that garden matrix will be split in 5 commission parts. You can see that on the left side under amount, where you can see $12, 4 cent, 4 cent, 9 cent, and 9 cent. जैसे ये गार्डन मैट्रिक्स का पे आउट का पूरा डिटेल है, तो लेफ्ट में आप देख सकते हैं कि पहले लेवल में आपको 12 सेंट मिल रहे हैं, दूसरे में 4, फिर तीसरे में 4, फिर 9 और 9, चौथे और पांचवे में. Okay, so let me change my screen. So I want to give you an example. For example, if you have someone in your downline, for example, in the 6 or 7 level, and he buy a unit, what happened then? तो ये एक उदाहरण दे रहे हैं कि समझो आपकी टीम में कोई 6वें या 7वें लेवल पे है, तो उसका यूनिट का क्या होगा वो बता रहे हैं. So I think 100% of the partners, they have open units at the moment because we are still in beta phase. Open units means when you go into your garden system, and for example, you have 100 or 200 units, they are not all filled, they are still free. हाँ, तो जैसे आप देखेंगे अभी हम लोग जो बीटा फेज में है, तो अगर आपने 100 या 200 अगर यूनिट ऑलरेडी खरीद लिए है, तो आप देखेंगे कि थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि सबके सब एक साथ में बढ़ना शुरू हो गया. So for example, if you are here the red person, अगर आप ये लाल है पहले पर्सन, and you have partners in until your 6th level, and the person here, the red one in number 6, he buys 1 unit. तो यहाँ पे जैसे आप जैसे लेवल दिखा है कि आप 6वें लेवल पे समझो एक व्यक्ति 1 यूनिट खरीदता है, and all have and the other partners, they all have open units. That means one part of the commission, the 12 cent, goes to the sponsor, and then 4 cent. This is very easy. Explains the algorithm is a little bit more difficult, but what I want to show you is that the commission parts are going to the sponsor and the upline. So that means it can happen that the red person here in the beginning, he not earn commission from this unit because was heißt denn verbraucht, Alex? Sorry. No, the commission is already split up between the different levels, no? Yeah, it's already split up. That means, you understand what I mean? That means if you want to be 100% sure that you get commission from the garden units, the partners must be in your first 5 levels. तो जैसे ये उदाहरण दिया है कि हमारा गार्डन मैट्रिक्स 5x5 है, तो ये उदाहरण में अगर 6वें लेवल पे आपका एक यूनिट आता है, तो इसमें दर्शाया गया है कि उनके ऊपर जो 5 अपलाइंस है उनको डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा दिया जाता है. तो 5 लेवल का है तो 5 यूनिट में डिस्ट्रीब्यूशन होता है. अगर आप सबसे ऊपर है जो एकदम लाल में मार्क किया गया है, तो उनको तो ऑफकोर्स नहीं आएगा कमीशन. 5 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है. This you can see only in the beta phase, because later when all the free users are coming, and they're coming really 100 millions of units every day, then we will have a lot of people between who don't have free units, for example, because their units are already filled this day. And then in this case, if person number 6 buy a unit, then it will go to this person here, and when they or in our example, number 2, 3, 4 are already filled, then the next one will go to number 1 here, and then this partner is earning from these units.
तो अभी क्योंकि हम बीटा फेज में है तो अभी बाहर से तो कुछ यूनिट्स आती नहीं है, लेकिन जब एक बार पब्लिक लॉन्च हो जाएगा और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लोग जब फ्री यूनिट्स वाले जुड़ेंगे, तो जैसे ये दर्शाया हुआ है ये हो सकता है कि समझो पहले 2 3 4 के अगर ऑलरेडी 5x5 का मैट्रिक्स बढ़ गया है और फ्री यूनिट्स आने शुरू हो जाते हैं, तो 6 यूनिट का भी जो पे आउट आएगा वो 5th वाले को जाएगा और पहले वाले को भी जाएगा और आपको भी आएगा। तो ये बीटा फेस में शायद ये नहीं होगा, लेकिन जैसे फ्री यूनिट्स आएंगे, मिलियंस ऑफ लोग जब कंपनी में जुड़ेंगे तो वो एम्प्टी स्पेसेस देखेंगे और वहां से बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपको भी अच्छी इनकम आएगी और पूरी मैट्रिक्स फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। यस। Okay, so what I want to say with this is in beta phase, it's very important that you bring a lot of directs into Vitae and they are buying units, because if you bring someone direct and he start building in the first 5 levels, you always get commission from the garden matrix units. तो क्योंकि हम बीटा फेज में हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि अगर बीटा फेज में आप बहुत ध्यान रखो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट्स को साइन अप कीजिए, स्पॉन्सर कीजिए, और अगर आप डायरेक्ट्स को स्पॉन्सर करते हैं और वो लोग भी आगे काम करना शुरू कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके 5 के 5 लेवल बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। So later it will change. Look, this is what I always explain. We are now the head of the structure. The free users, they're coming later under us. And when these people are buying the units, they will fill your 20 units every day. And when you have a lot of directs, and it doesn't matter later if these are networkers or normal people without network experience, the free users, they will bring you the 80% of your commission later. I gave you the example already. When you have only 100 directs, free directs later, they bring you later thousands of dollars of commission every day because they are direct to you and not under the 5th level. तो जैसे इन्होंने हमें पहले भी समझाया है कि जैसे पब्लिक लॉन्च होगा और फ्री यूजर्स आना शुरू हो जाएंगे और आपके खुद के बहुत सारे फ्री यूजर्स होंगे और समझो आप 100 लोग को जोड़ते हैं, तो ये 100 लोग क्योंकि आपके स्पॉन्सर के हैं तो सब आपके पास आएंगे। और एक चीज़ ये होगा कि जब फ्री यूजर्स पूरी सिस्टम में आना शुरू होंगे तो वहाँ जहाँ पे भी खाली जगह है वो पूरी भरते जाएगी। तो जब जब इतने मिलियंस ऑफ लोग जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि डेली आपके 20 जो यूनिट्स है वो पूरे के पूरे भरते जाएंगे पब्लिक लॉन्च के बाद। यस। Okay, I hope so. This is clear now. Alex. तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे और यस। Okay, Alex, did you got the first questions? Now I will get it, but please tell me what they ask. Alex? Only one second. Sir, if there is no question, I'll ask one question. So, Alex, it is related to garden matrix. We had some questions here, Mr. Jitana. Let me just start at the beginning, please. Okay, so how do, just 1 second. Okay, here's an interesting one. Why there are only 8 slots available for participants? This has just been changed today. Perhaps you would like to say something. आज एक सवाल है कि वो इनवाइट टोकन्स में 8 स्लॉट ही क्यों होते हैं, तो एलेक्स सर बता रहे हैं कि आज ही उसमें चेंजेस हुए हैं। यस सर। Und warum das limitiert ist and why it's limited. Okay, the reason for this is because we are in beta phase and the IT department want to monitor the growth because of server capacities. This is for testing, and when they see it stable, they will, like today, from now on, we have 12 invite tokens, and step by step, and later we will have, of course, unlimited. This is only because IT want to monitor this growth because of server capacities. अच्छा, अभी जैसे उनके सर्वर पे काम चल रहा है तो आईटी को डिपार्टमेंट को थोड़ा मॉनिटर करना है कि कैसे साइन अप्स आते हैं और उनको उसके ऊपर एक बोल सकते हैं कि मॉनिटर रखना है या कंट्रोल रखना है।
तो फिलहाल जैसे आज ही ये न्यूज़ आई हुई है कि 8 इनवाइट टोकन्स के बदले अभी 12 आना शुरू होंगी, तो 50% अभी बढ़ गई है इनवाइट टोकन, तो आगे जाके ये लोग ऐसे बढ़ाते रहेंगे. Okay, then I have a question from someone who asks, he has a couple of IDs, but not working with the auto buy function and all are upgraded. I'm 100% sure that he has not enough credits in his account. और एक जन का सवाल है कि उनके पास 2 आईडी है, वो दोनों अपग्रेडेड है, लेकिन दोनों में ऐसे वो तो कुछ ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं. तो एलेक्स सर का सवाल भी है और वो ऐसा समझते भी है कि ये दोनों आईडी में अभी ज़्यादा कुछ क्रेडिट्स बची नहीं होंगी. So let me explain. If you upgraded your account already and you need the first 200 credits, they will be reserved for the upgrade of the following months. That means you need to have more than 200 credits in your account, then you can buy units. तो वो बता रहे हैं कि समझो अगर आपने अपना आईडी को अपग्रेड कर दिया है, तो अपग्रेड करने के बाद पहले 200 क्रेडिट्स रिजर्व में रखे जाते हैं. वो 200 क्रेडिट्स आने के बाद ही आप आगे जाके गार्डन मैट्रिक्स के यूनिट्स बाय कर सकते हैं. Okay, then someone is asking when will we be able to start sending INR to buy Vitae token? अगला सवाल है कि कभी हम INR डायरेक्ट बेच सकेंगे साइन अप करने के लिए. Okay, so that the big update, they separate a lot of functions from the blockchain is not done yet. I hope it will be done in the next days. When this will be done, the big update, then they connect to the Indian exchange, not before, and not ask me for a date, because when the IT department say it's okay, update is done, then they can connect to the Indian exchange and then people can buy Vitaes with Indian rupees. तो अभी कंपनी का ब्लॉकचेन पे बहुत सारे अपडेट शुरू है और काफ़ी जोर में काम चालू है. तो ये जब एक बार अपडेट्स ब्लॉकचेन के हो जाएंगे और उनका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तभी आईटी डिपार्टमेंट अनाउंस करेंगे कि आपका INR से पेमेंट शुरू हो जाएगा. लेकिन मुझे भी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है. जब आईटी डिपार्टमेंट बताएगी तभी हम उसको शुरू कर सकते हैं. लेकिन इतना है, अपडेट्स चालू है ब्लॉकचेन पे, इसके ऊपर काम बहुत अच्छा चालू है. Okay, then I see some people that texting me in Hindi. Please in English. दोस्तों आप सवाल प्लीज इंग्लिश में पूछिए, वो तो इंग्लिश पढ़ पाएंगे एक्सेल सर. Alex, do you see some more questions from before? Because at the moment I don't have questions here. Yeah, there's one question here. How many founder members are we looking for worldwide? एक सवाल है कि वर्ल्ड वाइड हम कितने फाउंडर मेंबर्स देख रहे हैं जुड़ने के लिए. शायद मेरे ख्याल से पब्लिक लॉन्च के पहले का सवाल है. यस. Okay. It's not a question. We don't need 100,000 or 1 million founder members for the public launch. The companies say, they guess that we will have minimum 100,000 people in December. So this is what they think, but it's not a must if we have more or less. देखिए, ऐसा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 लाख लोग जुड़ेंगे या 10 लाख लोग जुड़ेंगे तभी पब्लिक लॉन्च होगा. लेकिन कंपनी का एक अनुमान है कि दिसंबर तक 1 लाख लोग जुड़ गए होंगे कंपनी में और शायद तब तक पब्लिक लॉन्च हो जाएगा. लेकिन ऐसा कोई नंबर का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कंपनी में. Actually, someone is asking how is the RRS system working, because this is a really interesting tool we have from Vitae. The residual. RRS system के बारे में एक सवाल है. Willst du es erklären oder soll ich? Kannst erzählen, irgendwann werden alle aktiv sein, ne? Okay, how does the RRS is working? This is the most important part or tool from a network side in Vitae. Let me explain how it works. हमारे सारे प्लान में वीटे में बहुत इंपॉर्टेंट टूल है RRS. मैं आपको समझाता हूँ कैसे काम करता है और कैसे हमारे लिए अच्छा है. Look, the problem in the network marketing industry in
old school network marketing companies, like product-based companies, but also in investment or in cryptocurrency companies, is that they have really thousands of inactive partners. हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक इशू है, स्पेशली जो ओल्ड स्कूल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है या जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, जो क्रिप्टो करेंसी अभी जो नई कंपनियां जो हमारे इंडस्ट्री में आ रही है, ये सब में एक बहुत बड़ा इशू है कि हजारों लोग इनएक्टिव रहते हैं. So, and because of this, the people, the networkers that don't have a real stability in their business, because if someone stopped working in his company, it will go down. Because if you don't motivate your team, if you don't talk with your partners, if you stop direct recruiting, your organization will be dead after 6 to 12 months. That's normal. जैसे हमने देखा है कि जो अभी जैसा काम चल रहा है, क्योंकि बहुत लोग इनएक्टिव रहते हैं, तो आपको कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है, लोगों के साथ बात करनी पड़ती है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है, उनसे बात करके. और एक चीज़ है कि आपको काम करना आप बंद नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट रिक्रूटिंग करना ही पड़ता है, डायरेक्ट साइनअप्स आपको करना ही पड़ेगा. अगर आपने करना बंद कर दिया तो 6-8 महीने में आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन रुक जाएगा, आपका ग्रोथ रुक जाएगा, जो अब तक ऐसा होते आया है सब कंपनी में, हम सब जानते हैं. यस. So that means if you want to be financially free, you need a solution for this. And Vitae has found a solution that there's on the middle term base no inactivity anymore. तो जो हम चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में फाइनेंशियल फ्रीडम, तो वीटे ने उसका एक सॉल्यूशन लाया है, जहाँ पे ये हम एक स्टेज के बाद हमें फाइनेंशियल फ्रीडम वीटे से मिलेगा. So I want to show you something in my presentation. 1 second, please. एक्सेल सर अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं. So Ich habe noch eine ganz interessante Frage. Ja? So look, this is in German, but it's not a problem. You will understand this. Look, I want to give you an example what's happened when a partner is joining. So, for example, a new partner is joining here, and he's doing the $200 upgrade. ये जर्मन में है, तो शायद आप भाषा नहीं समझेंगे, लेकिन मैं इसको बताता हूँ कि ये कैसे स्लाइड क्या एक्सप्लेन करता है. यहाँ पे पहला जो आपको बताया है, वो यहाँ पर एक व्यक्ति जुड़ता है, $200 का अपग्रेड करता है. So, and with this joining, he gets 1 unit for free, and with the upgrade, 5 more units. So he has 6 units together. जैसे हमें पता है कि एक व्यक्ति जब जुड़ता है तब उसको 1 यूनिट फ्री में दिया जाता है, और अपग्रेड होने पे उसको 5 यूनिट और मिलते हैं, टोटल 6 हो जाते हैं. So in our example, this partner will be here inactive. So he decides he's joining with another company, or he's got COVID-19, or he's not interested to do something with Vitae anymore. He is really inactive. हाँ, तो ये उदाहरण के लिए हम ऐसे जानते हैं कि ये व्यक्ति आगे कंप्लीटली इनएक्टिव रहेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, शायद वो दूसरी कंपनी में चले गया है, शायद वो बीमार पड़ गया, उसको कोविड-19 हो गया है, और शायद वो वीटे करना ही नहीं चाहता है, सिर्फ जुड़ा है, वो टोटली इनएक्टिव है. यस. So in the beta phase, because we are just started and the community is not so big, it can be that he's really for the next 2, 3, or 4 months inactive. But what will happen in the next weeks and months? I will explain. तो बीटा फेज में जैसे अभी हमें पता है कि कम लोग हैं, तो 2, 3 या 4 महीने बाद शायद वो उसका आईडी इनएक्टिव हो जाएगा, लेकिन उसके आगे जाके क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ. So this partner, this inactive account, has 6 units, and step by step he will earn commission because of the algorithm also from other teams. So he will earn 12 cents and again 12 cents and so on. So the first 200 credits will be reserved for the following months. That means the first 200 credits, he cannot take out the first 200. So that means he have step by step, maybe 50, 150, 190, and then $200 in his account again.
तो जैसे ये व्यक्ति है, इनके पास 6 यूनिट तो है गार्डन मैट्रिक्स में, और 6 यूनिट जैसे जैसे अपना बढ़ते जाएंगी और उनके अकाउंट में क्रेडिट्स आना शुरू होगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब उनके उनके क्रेडिट्स 150 हो गए, 190 हो गए, ये वो 199 हो गए, और इवेंचुअली अपने वो 200 हो जाएंगे, और जब 200 हो जाएंगे तो उनका अपग्रेड हो जाएगा। यस। In this moment, when he have exactly 200 or more than 200 credits in his account, the system will upgrade him again. तो जैसे उनको जो गार्डन मैट्रिक्स यूनिट से जो इनकम आई है उसमें जैसे $200 हो जाएगा तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर देगा। And with the second upgrade, he got 5 more units. जैसा उनका दूसरा अपग्रेड हो गया तो उनको 5 यूनिट और मिलेंगे। So together 11 units. तो अभी उनके पास 11 यूनिट है। So he's an active account again with 11 units and he's earning faster money. तो ये फिर से अभी एक्टिव पार्टनर हो गए हैं और उनके पास 6 नहीं 11 यूनिट है और उनका और जल्दी चलेगा, फास्ट चलेगा। And this is a Mendy, when he generated this, he's a genius. This is so good because when you understand this, yes, it can be in the beta phase that people are inactive for 3-4 months because we are not so big. But later, after public launch, what will be happen? Millions of units every day in the system. That means also an inactive partner will be active again and active again and active again. So there's later no inactivity anymore. Every partner in your team will be later an active partner. And this means for you that you have the first time in the network marketing industry, stability in your business, and it can go only up, not down anymore. तो इसके बारे में, ये सिस्टम के बारे में मैं मेंडी सर को मतलब बधाई देना चाहूँगा कि ये एक जीनियस का काम है। यहाँ पे हम पहली बार हमारे इंडस्ट्री में ऐसे दिखते हैं कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ता है, क्योंकि ये सिस्टम है तो आगे जाके बीटा फेज में भले थोड़ा वो इनएक्टिव रहे या रेड रहे, लेकिन उसके आगे जाके हर व्यक्ति एक व्यक्ति 100% आपका एक्टिव रहेगा और आपको इनकम बराबर हर महीने आती रहेगी। ये हमारी इंडस्ट्री में पहली बार हुआ है और सही में एक स्ट्रोक ऑफ जीनियस है। यस। Guys, if you understand this part of Vitae, you can bring every networker to Vitae, because this is not only in India, this is in Germany, in the United States, in the Thailand, Philippines, doesn't matter in where in the world. People in network marketing have the problem that they can never stop working, because when they stop working, business goes down. So if you explain this to people, what happened here after public launch, that means later, when you have a downline, a team in Vitae, you don't need to do these webinars. You don't need to talk to your partners. They will be all active, 100%. This is really a game changer in the network marketing industry. देखिए, ये जो सिस्टम है ये आपको आगे जाके सबको समझाना बहुत ज़रूरी है। और मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करता हूँ, आप कहीं पे भी कोई किसी भी नेटवर्क मार्केटर से आप बात कीजिए, भले वो जर्मनी में, अमेरिका में है या और कोई देश में है, सबका एक ही इशू होता है कि कैसे उनको काम करते ही रहना पड़ता है, नए लोग को जुड़ना ही पड़ता है। अगर वो एक ये सिस्टम, ऑडिटेड सिस्टम को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये सिस्टम के कारण हमें आगे जाके बहुत सारा काम नहीं करना पड़ेगा। एक बार जैसे लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे, एक्टिव होना फिर से शुरू हो जाएंगे, तो आगे जाके आपको फिर पब्लिक लॉन्च के बाद आपको कोई मीटिंग नहीं करनी, कोई वेबिनार नहीं करनी है। आपका 100% टोटल आपका ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव रहने वाला है और आपको इनकम देते ही रहेगा। तो सालों साल, महीनों दर महीने, सालों साल पेमेंट देते रहेगा। यस। Okay, then I got a question here, Axel. Soll ich das mal auf Deutsch erstmal sagen? Ja. Was würde die exakte Arbeit sein oder die Rolle eines Founder-Members nach dem öffentlichen Start? Das ist eine spannende Frage. Die haben das, glaube ich, irgendwie gar nicht gerafft, dass sie ja danach sozusagen frei weiterarbeiten können, wenn sie wollen. You can, okay, yeah. Okay, let me just read the question. Soll ich das mal sagen oder nicht? Hmm? Okay, Mr. Dananjay asked, what would be the exact working or exact role of a founder member after the public launch? धनंजय जी का सवाल है कि पब्लिक लॉन्च के बाद फाउंडर मेंबर का एग्जैक्ट रोल क्या होगा, मतलब उनका क्या होगा। यस।
Okay, of course, we will still have the network part. You can bring in upgraded partners, you can bring in free members, you can bring hundreds or thousands of free members in. This will push your commission on a very high level. पब्लिक लॉन्च के बाद ये तो अपना अपग्रेडेड मेंबर्स का सिस्टम तो चालू ही रहने वाला है, लेकिन बहुत अच्छा चीज होगा कि आप अभी फ्री मेंबर्स लोग को भी जोड़ सकते हैं। तो आप जितने चाहे उतने फ्री मेंबर्स को जोड़ सकते हैं, और जब भी आप फ्री मेंबर्स ज्यादा से ज्यादा जोड़ते जाएंगे तो उनकी यूनिट आपकी इनकम को बहुत फास्ट कर देगी, बहुत तेजी से आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी। Yes. Look. What is the difference between beta phase and public launch? Of course, we will have later the gaming platform and all the other things, but the difference between beta phase and public launch is that in beta phase only upgraded members or people can start who are doing the upgrades, and after public launch people can decide, I want to be a free member only and forever, I want to do immediately the upgrade, I want to do that later. So we will have later a lot of free members, some upgraded members, of course. This is the difference. तो मेन फर्क यही है कि अभी हम बीटा फेज में हैं, तो अभी तो सिर्फ अपग्रेडेड मेंबर्स ही जुड़ सकते हैं। तो जितने फाउंडर्स मेंबर हैं उनको एक बहुत एक अच्छा चांस है कि अपग्रेड मेंबर्स को जोड़े और अपनी टीम बढ़ाए। आगे जाके जब पब्लिक लॉन्च होगा तभी फ्री मेंबर्स भी आना शुरू होंगे, और फ्री मेंबर्स भी आगे चल के अपने फ्री मेंबर्स जोड़ सकेंगे, तो फिर दोनों हो जाएगा। तो अभी से हमें टीम बढ़ाने पे अभी फोकस रखना है। यस। Okay, the last thing asks how many people have joined so far globally. I think, I don't have the exact number, I think it will be around 30,000, can be a little bit more, something around 30,000. और एक सवाल था कि टोटल ग्लोबली कितने लोग जुड़े हैं, पूरे विश्व भर में कितने लोग जुड़े हैं। तो एक्सेल सर के पास अपना एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन 30,000 जितने लोग उनके मुताबिक जुड़ गए ऑलरेडी। And this will every day and every week more and more people are starting this Vitae now worldwide. So they come speak now. We duplicating every month now. तो अभी हर दिन और हर हफ्ते ज्यादा से ज्यादा लोग अभी वीटे को जुड़ रहे हैं, और डुप्लीकेशन बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। Okay, so then someone is asking about that when the company is doing updates that they are posting before a status message. Yes, we already are in communication with the company that the IT team will like this. When you log into your back office now, you see a short message, this happened or there's an update. They promise us they will do that in the future. तो एक सवाल था कि जब हमें पता है कि बीटा फेज में कंपनी का बैकग्राउंड में बहुत सारा काम शुरू है, तो कंपनी से मतलब आईटी लोग कम्युनिकेशन करे कि वो नोटिस दे देवे कि अभी बैकग्राउंड में काम चालू है। तो हमने अभी भी देखा है कि लास्ट टाइम भी वैसा हुआ था कि नोटिस में बराबर आपको सिस्टम का अपग्रेड के बारे में एक पॉइंट वाइज आपको डिटेल मिल जाता है, और आगे जाके भी हमें ये डिटेल मिलते रहेगा। यस। Okay, Vinay Kumar is asking, but what happened between gap months? I don't know what you mean with this. Please विनय मैं आपने एक सवाल पूछा है गेट मंथ के बारे में, लेकिन वो सवाल आपका बराबर समझने में नहीं आया, वापस प्लीज बताइए। Okay, so then Svara Patil is asking, you said after the 6th level you won't get points, you mean commission from the garden units. What is in after free launch when there are millions of users after the 6th level joined? He means you don't get a benefit. Let me explain this. Can you? Yes. एक स्वरा जी का सवाल है कि जैसे अभी हम गार्डन मैट्रिक्स में देते हैं, अगर 6th लेवल में अगर लोग जुड़ते हैं तो आपको उसका कमीशन नहीं आता है, तो आगे जाके जब फ्री लॉन्च होगा मिलियंस ऑफ लोग लाएंगे और तभी भी वो भी अगर 6th लेवल पे आएंगे तो क्या होगा? Okay, you can get commission from people under your 6th level, for example, from the 10th or 20th level, but you must understand, if there are people between who have open units, then the commission go to these people. Later, after public launch,
we will have a lot of people, and I'm sure you also, when your 20 units are filled every day, then the unit goes to the next person, the commission part. You understand? So you can get commission from your downline also when they're deeper than 6 levels, but only when they don't have open units. And we will have this case after public launch, because when there are enough units, most of the people, they don't have free units later or open units. देखिए, इसका जवाब है कि जैसे समझो 6 लेवल पे कोई यूनिट आया और बात सही है कि 5 लेवल में इनकम जाती है, लेकिन जब फ्री यूनिट्स आना शुरू होगी और लाखों फ्री यूनिट्स आएगी, तब ऐसा होगा कि समझो आपके जो ऊपर जो 5 लेवल है उसमें दूसरा, तीसरा, चौथा लेवल की पूरी टोकन बढ़ गई है। अगर पूरी टोकन बढ़ गई है तो वो जब वो उसमें से सिस्टम से निकल जाती है, तो जो आपका छठवां लेवल है वो अपने स्पॉन्सर को भी देगा और जो पहला बंदा है उसको भी बेनिफिट मिलेगा। तो डेफिनेटली एक बार जब प्री लॉन्च चालू हो जाएगा और बीच में और लोगों की जो ओपन यूनिट्स है जो पूरी बढ़ जाएंगी, तो सभी लोग को ये इसकी इनकम मिलेंगी। आपको छठवां, सातवां, 10वां लेवल के भी लोग आपके साथ आपको इनकम देंगे। Yes. Okay, then so again, the trick in Vitae also after public launch is when you guys, or when we bring a lot of free users in, then you will earn really millions of US dollar in Vitae. The trick later is not to bring the networkers in after public launch, sondern to bring people for free in, the free users. And doesn't matter if they are doing the upgrade or not, the free users that bring later 80% of your commissions, and this can be later really hundreds thousands of US dollar per day if you want. देखिए, इसमें बहुत अहम बात बता रहे हैं कि जैसे पब्लिक लॉन्च हो जाएगा तब हमें पूरा ध्यान देना है फ्री यूजर्स को जोड़ने में। फ्री यूजर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें भी और हमारी टीम में भी ऐसा बताना है कि उनको फ्री यूजर्स को जोड़ना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है वो फ्री यूजर अपग्रेड करता है कि नहीं करता है, फ्री यूजर्स को जोड़ते ही है वो आगे भी फ्री यूजर्स अपने फ्री यूजर्स को जोड़ सकता है। और आगे चल के आप देखेंगे कि आपकी 80% 80% आपकी इनकम ये गार्डन मैट्रिक्स से फ्री यूजर से आएगी और आपकी इनकम मिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिकन डॉलर्स में भी जा सकती है, सिर्फ फ्री यूजर्स आपको बहुत कमा के देंगे। And I mean, honestly, under us, we are networkers. What do you think what will happen after public launch when I go in Delhi on the corner place with a flyer, 10,000 flyers, and on every flyer is, hey, there's a new social media platform. When you join for free, you don't have to pay. You get a product as a gift, and this product brings you $344. And I give everybody in Delhi this flyer, and they can join for free. So I can bring more than 1,000 people per day, free users, into Vitae because they have no risk anymore. This will be so easy. देखिए, एक उदाहरण देते हैं कि हम तो नेटवर्क मार्केटर है। समझो एक उदाहरण है कि आप एक फ्लायर को प्रिंट करा लो 1000, 2000, 10,000 और फिर आप एक पब्लिक प्लेस में जाए और सबको ये फ्लायर में लिखा होगा कि मैं आपको एक फ्री में एक नई सोशल मीडिया में जो जुड़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ और ये इसमें अगर आप जुड़ेंगे तो आपको प्रोडक्ट तो पूरा फ्री मिलेगा और उसके साथ आपको $344 भी मिलेंगे, 25,000 रुपये भी मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे आप ये फ्लायर्स को बांटते जाते हैं, मतलब 10 नहीं, 100 नहीं, आप 1000 लोग को भी दिन का जोड़ सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। यस। Okay, let me look. Dr. Ackerwald is asking how many units are distributed now. I don't know how many together, but I know that there are around 200,000 units every day at the moment. 200,000 every day. डॉक्टर अग्रवाल जी का सवाल है कि अभी तक कितने टोटल यूनिट्स हुए हैं, तो उनको एक्सेल सर को एग्जैक्ट पता नहीं है कि कितने हैं, लेकिन अभी का जो फिगर है हर दिन 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस होते हैं। यस। Okay, then people is asking about, they want to see the old functions in the dashboard about the downline, income levels, proposed matrix. Let me say something. This is, they just started to make it better. What you can see now,
And already today, they're coming more and more things in. It's not the end. You will have all the functions again and more. So it's the IT team is working on that. देखिए, और एक सवाल है कि अपना जो ओल्ड जो वर्जन था उसमें जो इनकम डेली इनकम दिखती थी और पर्पस मैट्रिक्स का जो दिख रहा था जीनियोलॉजी, तो उनका कि वो हमें सबको वापस चाहिए, ऐसा सवाल है उनका। तो एक्सेल सर बता रहे हैं कि देखिए बहुत सारे अपडेट चालू है और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे फ्री फीचर एडिशंस होने वाले हैं। तो हमें बहुत सारा चीज़ हमें इसके बारे में भी डैशबोर्ड पे मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ आगे आने वाली है। यस। Okay, then Sanjeev Dua is asking after launch when I will get $344 per unit towards. And but he means what is with all the units? For example, some people they have more than 1,000 units in the system and they are not all full. So and then they are buying later also 20 units per day. Let me explain. If you have, for example, 1,000 units and later you earn $6,880 because your 20 units will be filled every day, but your 1,000 units are on the top. That means they also will be filled very fast. That means, of course, 1,000 units is $344,000 US. So you will earn this money plus the commission from your 20 units every day. तो ये एक सवाल है कि मतलब समझो पब्लिक लॉन्च हो जाएगा और मेरा एक यूनिट है उसका $344 आएगा, तो उसके बाद क्या? तो उसका जवाब है कि देखिए आपके पास एक ही नहीं होगा, आप समझो आपके पास 1,000 यूनिट्स है और 1,000 यूनिट से एकदम ऊपर जाके है, मतलब क्योंकि आप पहले जुड़े हैं तो आपके ऊपर है। और जब फ्री यूनिट्स आएंगे और जब 1,000 यूनिट सब बढ़ते जाएगी और तभी भी उसके बाद भी आप एक दिन का आप 20 यूनिट ले सकते हैं और वो आप देखेंगे कि ये 20 यूनिट भी तो पूरी बढ़ते जाएगी और आपको $6,880 उसके भी मिलेंगे और जो 1,000 यूनिट है उसके भी मिलेंगे। Actually, there is a specific question related to that. Let's say after public launch, if I got 1,000 unit and about 40 units get filled fully on that particular day, so will I get income for those 40 units or per day I'll only get for 20 units? No. Look. You can buy only 20 units per day, but if you look in your garden units later, I have, for example, more than 5,000 units. So and these are free units. So that means when millions of free members are coming, all 5,000 units, they will be filled at the same time. तो मैंने एक सवाल पूछा था कि अगर समझो जब पब्लिक लॉन्च हो जाएगा और मेरे पास 1,000 यूनिट है, उसमें से टोटल 40 यूनिट अगर एक दिन में मैच्योर हो जाएगी तो मुझे सिर्फ 20 यूनिट का विड्रॉल मिलेगा कि पूरा मिलेगा? तो उन्होंने बताया कि उनके खुद की अभी ऑलरेडी 5,000 यूनिट है और जब पब्लिक लॉन्च होगा और फिर यूनिट सब पूरा बढ़ने का शुरू होगा तो उनकी पूरी क्रेडिट्स उनको उनके अकाउंट में आते रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। Yes. Guys, that's why it's so important to buy 20 units per day, also when they're not filled every day, because when the free users are coming, it really makes sense to have hundreds or thousands of units, because this is a guaranteed commission. Your units will be filled. When you buy a unit, the unit will be placed in the garden matrix with a fixed position. That means all the other units from the free users, they are coming under your unit. That means you will get first your commission and then the free users. देखिए इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि लिमिट तो बाइंग की है, तो 20 दिन का ले सकते हैं, लेकिन इसलिए बहुत जरूरी है कि आगे चल के आपके हजारों यूनिट होने चाहिए। जितने ज्यादा आप लेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जब फ्री यूजर्स आएंगे तो सबसे पहले वो आपके लेवल बढ़ना शुरू करेंगे, आपको पहले इनकम देंगे और फिर उनको इनकम आएगी। तो बहुत जरूरी है कि हम गार्डन यूनिट्स लेने में रुके नहीं। दिन के हमें 20 ही मिलते हैं तो 20 हमें छोड़ने नीचे लेते ही जाना चाहिए। Yes. Okay, then there is someone with HP. He said he's active. He by units he upgraded already, but he say he cannot join anybody. So please ask him to speak with his upline that he can show him how to use the Vitae token management, that he can register other members. HP सर का एक सवाल है कि वो
ऑलरेडी अपग्रेडेड है, एक्टिव है, लेकिन उनको आगे जुड़ने का आता नहीं है, तो आपको एक मतलब रिक्वेस्ट है कि आप जिसके साथ आप जुड़े हैं आप उनसे बात कीजिए, तो वो आपको बता देंगे कि कैसे इसमें काम करना है और कैसे जुड़ना है, उसका पूरी सिस्टम बता देंगे, प्रोसीजर बता देंगे. यस. Okay, then there is a question from Dr. Swapnil. He asked, what if we don't buy garden units? अगला सवाल है डॉक्टर स्वप्निल से कि क्या होगा अगर हम गार्डन यूनिट्स नहीं खरीदे. If you don't buy garden units, you will not earn commission from the garden matrix. You will earn commission from the purpose system and maybe from the destiny, but 100% from the purpose system. But let me say to you something. If you don't buy units, you lose a lot of money. This brings you really later millions. The garden matrix is the most important commission part in Vitae. तो जैसे उनका सवाल है कि गार्डन मैट्रिक्स नहीं लिया तो क्या होगा, तो उसका जवाब है कि देखिए आपको पर्पस मैट्रिक्स से तो पूरी इनकम मिलेगी, डेस्टिनी मैट्रिक्स से भी शायद मिलेगी, लेकिन अगर गार्डन मैट्रिक्स आप नहीं लेते हैं तो जितने आपके पास टोकन शुरुआत में दिए गए उतनी आपको इनकम मिलेगी, उसके आगे इनकम बंद हो जाएगी. लेकिन इनकी बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है कि आप गार्डन मैट्रिक्स लेना शुरू कीजिए, लेना जरूरी है. आप बिलियंस कमा सकते हैं गार्डन मैट्रिक्स से और बहुत बहुत बड़ी इनकम आपको गार्डन मैट्रिक्स से ही आने वाली है. तो बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए, आपकी टीम के लिए, सबके लिए गार्डन मैट्रिक्स रोज खरीदना. Yes. Okay, then I have a question from my side because I'm in Asia and my connection is not so good. Can you please all stop your video because then we have a better connection. Can you please do that? एक्सेल सर का एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि वो एशिया में जहाँ पर है अभी वहाँ पे कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है, तो आप सब लोग अपना वीडियो बंद कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन होगा और उनको दिक्कत कम होगी. यस. So, okay, then let me see next question. Then I have a question from Shriyat Nair. Wait, by the end of December, I'm having 4,000 plus garden units, and by launch, millions of free people are joining. Since company is having daily 20 units capping, will all my 4,000 units? Okay, this is what I explained before. It doesn't matter if you can buy only 20 units per day. All your units, if you have more than 4,000 or 10,000 units in the system, they will be filled in at the same time. So it brings you really later millions of US dollar. सिद्धित नायर जी का सवाल है कि दिसंबर तक मैं 4,000 यूनिट्स को जमा कर लूँगा, तो फिर वो क्या पूरी बढ़ जाएंगी. तो जैसे उन्होंने पहले भी बताया है कि भले आपको एक लिमिट है, दिन का 20 ही खरीद सकते हैं, लेकिन आगे चल के पब्लिक लॉन्च के बाद अगर आपके 4,000 हो या आपकी 10,000 होगी, सब एक साथ में बढ़ जाएंगी. इसलिए बहुत जरूरी है आप ज़्यादा से ज़्यादा गार्डन यूनिट रखें और आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स गार्डन यूनिट से कमा सकते हैं आगे जाके. Okay, then there's a question from Rakesh Sharma. He asks, if someone is inactive and he sponsors someone, will he get the $67 from the purpose matrix or not, the matrix commission? राकेश शर्मा जी का सवाल है कि समझो एक व्यक्ति इनएक्टिव है लेकिन वो एक जन को स्पॉन्सर करते हैं, तो क्या उनको पर्पस मैट्रिक्स के $67 की इनकम आएगी क्या, और आगे गार्डन मैट्रिक्स का भी क्या? यस. Okay. So if someone is inactive, he will earn commission from the garden matrix and sponsor commission, from the purpose sponsor commission, but an inactive partner will not earn matrix commission from the purpose matrix. That means he will not earn the $67. देखिए, जो व्यक्ति इनएक्टिव है अगर वो किसी को स्पॉन्सर भी करता है तो उसको गार्डन मैट्रिक्स से इनकम उसकी तो शुरू रहेगी, वो रुकेगी नहीं, लेकिन पर्पस मैट्रिक्स का जो $67 की जो उसको इनकम आनी चाहिए स्पॉन्सर की, वो इनकम उसको नहीं आएगी. उसके लिए उसको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है. यस. Okay. Then someone is asking if his commissions and everything is secure in the system. Yes, everything is secure. Please also use in your settings 2FA. What is the 2FA? The Google Authenticator
verification so that your account is more secure, because when you use this, nobody can hack your account. You know, एक दिन का सवाल है, Gitana, you know what I mean with Google yes, Authenticator, yeah? yes. एक दिन का सवाल है कि मेरा जो कमीशन जो जमा हो रहा है वो सिक्योर है कि नहीं, सिक्योरिटी के बारे में सवाल है। तो उनका जवाब है कि देखिए ऐसे तो पूरा सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी अगर आपको ऐसा कुछ आपको डर है तो आप एक 2FA आपको पता होगा गूगल ऑथेंटिकेटर है, तो ये गूगल ऑथेंटिकेटर आप उसको 2FA को एक्टिव कर दीजिए तो आपका बहुत सिक्योर हो जाएगा और आपका अकाउंट हैक नहीं होगा, तो ये करना बहुत जरूरी है। यस। Okay. Wait. I'm supposed to. Wait, I'll have to read here. He joined. Okay, there's a question between there was one guy before he asked because what is with the gap, yeah? So he asked if someone is inactive and he joined only with $200, and then maybe because of beta, because we just started, he is 2, 3, or 4 months he's inactive, and then maybe in months number 4 or 5, still in beta phase, he have $200. That means he is active again for months, for this month, and then it can be that he's in the next month inactive again, but after lunch, we will have the following situation. After lunch, millions of free users are joining and they're also buying units and they get units for free. That means after public launch, there's no gap anymore between also an inactive user will fill or will earn more than $200 in the first months. So there's no gap. An inactive user, when the company grows and the community is big, he will be active in the same months again. देखिए एक सवाल है कि जैसे एक व्यक्ति है अभी जुड़ा है, अपग्रेडेड है, लेकिन वो इनएक्टिव है और शायद उन्होंने बताया कि वो 3-4 महीने और भी इनएक्टिव रहेंगे, बीटा फेस में ही रहेंगे और 5वें महीने में अगर उनको गार्डन मैट्रिक्स से $200 की इनकम आएगी, कमीशन आएगा, तो वो फिर एक्टिव हो जाएंगे और शायद 6वें महीने में वापस इनएक्टिव हो जाएंगे। तो ये हो सकता है बीटा फेज में, लेकिन पब्लिक लॉन्च हो गया, फ्री यूजर्स आएंगे, फ्री यूजर्स खाली उनको फ्री यूनिट नहीं मिलेंगे, वो आगे खरीदेंगे भी, ये भी होने वाला है। तो जब इतने सब लाखों फ्री यूजर्स आएंगे और भी खरीदेंगे तो सभी के यूनिट्स, गार्डन मैट्रिक्स में यूनिट्स बढ़ जाएंगे, तभी कोई फर्क नहीं होगा कि आपका गार्डन इनएक्टिव का गार्डन मैट्रिक्स यूनिट है कि एक्टिव है, सबके सब बढ़ जाएंगे। पहले महीने में ही हम आशा रख सकते हैं कि सबके सब बढ़ जाएंगे और सब लोग एक्टिव हो जाएंगे फिर से और उसके आगे एक्टिव रहेंगे। यस। Okay, then there's some guys who asking if I can show how the garden matrix works in my back office because people need to be what is this confidence from me. फिर से सवाल है कि उनको रिक्वेस्ट है कि क्या वो अपने बैक ऑफिस में अपना गार्डन मैट्रिक्स कैसे काम करता है वो बताएंगे क्या, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सेल सर बताएंगे तो उनको ज़्यादा विश्वास आएगा। यस। Okay, 1 second. Let me share my screen. I show you how it's demonstration दे रहे हैं। Yes. So this is my account. As you can see, I have 6,326 units at the moment. ये एक्सेल सर का अकाउंट है, उन्होंने लाइव खोला है और उनके पास 6,326 यूनिट अब तक है। And as you can see, and this is more important, on the right side, you see already I have my first 8 units are totally full. और अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में आप देखिए कि उनके 8 यूनिट तो पूरी बढ़ गई है, मतलब $344 उनको पूरा 8 यूनिट का ऑलरेडी आ चुका है। So these units are, these units are full. Then you can see, for example, in unit number 9, I have the first 4 levels full, and in level number 5 here, I have 571 unit parts, so the 5th level is not full. तो जैसे हम ये यूनिट नंबर 9 को देखेंगे तो उनके 4 लेवल पूरे भर गए हैं और 5वें लेवल में 571 है और वो पूरा नहीं भरा है अभी तक।
So, and then you can see that the units, and this is important also for later, it's not like only 20 units will be filled per day, so all units will be filled at the same time. You can see that I have a lot of units where I have, for example, in the beginning is only like in unit number 12, is only the first 5 are full, but then in other units, unit number 18, for example, 5 and 25 are full. And then I have a lot of, you see, when you see the units between 19 and 30, you can see that a lot of units are filled at the same time. देखिए अभी आप जैसे उदाहरण में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे उनके यूनिट है, जैसे 12 नंबर है जहाँ पे सिर्फ पहला लेवल ही बढ़ा है, 18 नंबर है जहाँ पे 2 लेवल बढ़े हैं, 20 लेवल है जहाँ पे तीसरा लेवल तक बढ़ा है। तो ऐसे बहुत जगह पे बहुत खाली भी है, और ये भी बहुत जरूरी है कि जब पब्लिक लॉन्च होगा तो जितनी खाली जगह है सब पूरी भर जाएंगी, एक साथ में सब बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और सबका सब हमें कमीशन मिलेगा। यस। So that's why it's so important for you that you start buying units now, also when they are not filled every day, because I know exactly when we have public launch, I have more than 10,000 units. That means I get a guaranteed commission for more than $3 million, and not in 1 year. I will get that very fast. देखिए जैसे पब्लिक लॉन्च होगा तब तक आप जो देखते हैं मेरे पास जितनी यूनिट है, आगे चल के मैं 10,000 के ऊपर इसको कर दूंगा, और जब 10,000 के ऊपर हो जाएगा तो पब्लिक लॉन्च के बाद बहुत ही जल्दी मुझे अबाउट $3 मिलियन की इनकम होगी, और इसको बहुत समय नहीं लगेगा। पब्लिक लॉन्च के बाद ये आना शुरू हो जाएगी, शायद 1 महीने में भी हो सकता है। यस। Okay, then there's someone who asked, what was the reason that Vitae started, that someone, he mean Mandy, that he built Vitae? एक दिन का सवाल है कि मैंडी सन ने ये वीटे कंपनी क्यों शुरू की? Okay, look, let me explain. Mandy, he's an entrepreneur, and he worked more than 8 years in the network marketing industry, and he was very successful, but he saw all the problems that people are inactive, and many people, they stop after 3 months and they are not successful in this industry. And his vision was to create a system where there's no loser anymore. He had the idea it must be possible to create a platform with the idea of growing global prosperity, and this was the reason. देखिए मंडी सर खुद एक एंटरप्रेन्योर है और बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, और उन्होंने 8 साल नेटवर्क मार्केटिंग भी की है, लेकिन उन्होंने ये देखा कि जैसे नए लोग जुड़ते हैं, ऐसा बहुत बार होता है कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं वो 3 महीने में बिजनेस छोड़ देते हैं या आगे चल के छोड़ देते हैं, और जो इसमें हमारी इंडस्ट्री में जो इनकम आती है वो कम लोगों को आती है, ज़्यादातर लोग को शायद इनकम आती भी नहीं है, तो बहुत सारे लूजर्स होते हैं। तो उनको ऐसा था कि मैं ऐसे एक सिस्टम होनी चाहिए जहाँ पे कोई भी लूजर ना हो, कोई भी गवाए नहीं, और सबको एक अच्छी इनकम आए। तो वहाँ से उनको वीटे की आइडिया आई कि जहाँ पे ग्रोइंग ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, मतलब ग्लोबली विश्व भर में सब लोग प्रॉस्परस रहे, सब लोग की इनकम बढ़े। यस, सब कमाए। यस। Okay, then it's from Ketan a message that he asked, after public launch, when millions of people are joining, what are the companies doing about server capacities? They're capable that millions of people can join at the same time. And the answer is yes, that's why we are in beta phase, because the company is preparing the software, the apps, everything that we can really have millions of partners using Vitae at the same time. That's why we are in beta. केतन भाई का एक सवाल है कि जैसे पब्लिक लॉन्च होगा और मिलियंस ऑफ लोग ये कंपनी में जुड़ेंगी, तो कंपनी अपना सर्वर के बारे में, उसके बारे में क्या कर रही है? तो एक्सेसएल का जवाब है कि देखिए अभी हम बीटा फेज में है और वही काम चालू है, और सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही अपग्रेडेशन नहीं चालू है, ये अपने ऐप भी ला रहे हैं। तो बहुत सारे वे होंगे जहाँ पे लोग कंपनी में जुड़ सके, और उनका पूरा सर्वर और कैपेबिलिटी सब वो कंटिन्यूस बढ़ाते रहे हैं बीटा फेज में, और ये सब ठीक पब्लिक लॉन्च तक सब बराबर हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस। Okay, then I get a lot of, I think more than 30 questions about Garden matrix algorithm, how it works. Please, Alex, can you post
the link again where Burkhard and also me explains the garden matrix so people can have a look in the video. I just posted that 2 days ago, where I uploaded it newly. But I see not only from India, I see some people are from, I think this is Africa or Nigeria or something. Oh, right. Yeah, I can do that. No problem. I will do that. एक्सेल सर को अबाउट 30 सवाल है और सब गार्डन मैट्रिक्स के एल्गोरिथम के बारे में पूछ रहे हैं। तो जैसे हमारे ग्रुप में हमें आया था, हमने भेजा भी है, एक वीडियो है 2 घंटे का है जो गार्डन मैट्रिक्स बहुत डिटेल में समझाता है। और वो अपना मिस्टर ब्रुक करके है जो जिसे हम आई विल जस्ट ऐड, उसको हम डॉक्टर गार्डन मैट्रिक्स बोलते हैं। तो वो एकदम उन्होंने एकदम डिटेल में समझाया हुआ है। तो वो वापस पोस्ट कर रहे हैं, वो वीडियो का लिंक वापस ये चैट में पोस्ट कर रहे हैं। तो आप वो लिंक को प्लीज सेव कर दीजिए और पूरा 1 या 2 बार देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे गार्डन मैट्रिक्स का एल्गोरिथम कैसे काम करता है। Yes. Okay, then there's an important question from Leaders Way. He's asking, or she, this project already has been running for 2 years. Then why it's taking so much time to launch it in India and I say worldwide? तो एक जन का सवाल है, शायद लीना जी का है, कि ये प्रोजेक्ट 2 साल से चल रहा है तो इतना वक्त क्यों लग रहा है इनको इंडिया में लॉन्च होने के लिए या वर्ल्ड वाइड लॉन्च होने में। यस। Okay, let me explain. The project Vitae is not running for 2 years. The company is programming the software since 2.5 years. And you can find in YouTube some videos since 2.5 years about Vitae. But the beta phase started in the middle of February this year. तो मैं बताना चाहूँगा कि वीटे कंपनी 2 साल से शुरू नहीं है, 2.5 साल आज हो गए जब से इनका वीटे ने अपना कंपनी का सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू किया था। अगर आप YouTube पे जाएंगे तो आप मतलब 2-2.5 साल पहले के आप वीडियोस भी देखेंगे जिसमें वीटे के बारे में जो काम चल रहा था उसके बारे में वीडियोस भी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन कंपनी का एक्चुअल लॉन्च जो अपग्रेड से शुरू हुआ वो फरवरी 2020 के मिड से हुआ है। So, and this is important to understand. The last 2 years, the company was checking, and this is really difficult. You know, the algorithm of the garden matrix is so different from a normal network marketing payout plan. So that needed really a lot of months to program this, that it works really without bugs. And it's done now. The payout system is working, and now they implement the other things like this is more stable, that we can have million users of this at the same time, gaming platform, the app is coming, all these things. That's the next steps in the beta phase. I mean, this is done, then we will have the public launch. देखिए ऐसा था कि 2 साल से कंपनी जो सॉफ्टवेयर पे काम करती थी, सबसे ज़्यादा काम उनका गार्डन मैट्रिक्स के एल्गोरिथम में गया है, क्योंकि वो हम सब जानते हैं कि हमने अभी तक जो प्लान में काम किया है गार्डन मैट्रिक्स जैसा हमें ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है, जाना नहीं है। तो ये कंपनी को भी अपना सॉफ्टवेयर जो डेवलप करना था उसमें गार्डन मैट्रिक्स में बहुत वक्त गया है और 2 साल से पूरा डेवलपमेंट में गया था इसके एल्गोरिथम को। लेकिन अभी जो पूरा जो लॉन्च हो गया है तो अभी उसके बाद बीटा फेस में अभी वो लोग अपना गेमिंग पे काम कर रहे हैं, अपना ऐप लॉन्च कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी नई चीजें आएंगी जो हमारे लिए आगे जाके अवेलेबल होगा, उस पे अभी सब काम चल रहा है। यस। Okay, then there's a question from Naresh. He asked, what's the guarantee that this will not go into a scam? This question we get from people who we talk about Vitae. एक नरेश भाई का सवाल है कि क्या गारंटी है कि ये एक स्कैम नहीं हो जाएगा। तो एक्सेल सर बताते हैं कि ये सवाल हमें बहुत सारे लोग से बहुत बार आता है। So, okay, let me explain. When someone is doing a scam, then he wants to collect money from the users, correct? तो वो बताते हैं कि हम जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ स्कैम करना है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग से वो पैसा इकट्ठा कर ले। ये सही बात है कि नहीं? आपको सवाल पूछना है। In Vitae, 100% from the turnover goes back to the users. 100%. There goes not a single penny to the company.
So it cannot be a scam because the company earn from the commission plan nothing. They only, of course, they earn, but they have to build also a structure, a network like you and like me. But they not collect money from the users, so it cannot be a scam. ये जैसे हम सब जानते हैं कि वीटे का जो कंपनसेशन प्लान है, जो आप अपग्रेड होता है, उसका पूरा 100% कमीशन हमें बांटा जाता है। तो कंपनी जैसे पूरा कमीशन अगर बांटते हैं और कंपनी अगर पैसा खुद के लिए जमा ही नहीं कर रही है, तो स्कैम कैसे होगा? क्योंकि वो आपसे पैसा लेती ही नहीं है। ये बात जरूर है कि कंपनी भी एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और उनकी आईडी है, तो वो भी नेटवर्क करके ही पैसा कमाती है हमारे साथ, हमारे अपलाइन में है। लेकिन जैसे आपको सबको पता है कि जो $200 दिया जाता है वो पूरा कंपनी प्लान में 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है। कंपनी आपसे पैसा ही नहीं लेते हैं, तो फिर स्कैम का सवाल कहाँ से होता है? वो लेती ही नहीं आपसे। यस। Okay, then Deep is asking, so the company is registered in Switzerland and with a legal registration. And he's asking, what is about other countries? For example, India, there should be also a legal registration of Vitae in India. दीप भाई का सवाल है कि कंपनी का जो है सर रजिस्ट्रेशन, लीगल रजिस्ट्रेशन स्विट्जरलैंड में है, तो आगे चल के क्या होगा? क्या कंपनी इंडिया में भी रजिस्टर्ड होगी? Okay, so yes, we are in beta and Vitae is registered in Switzerland. And I asked this question already to Mandy a couple of weeks ago, and he said to me, we will register, I mean, Mandy, we will register Vitae in every country where we have to. If there is something in India where we must register, Vitae will do that. So they have a lawyer department. They're working with one of the biggest lawyer companies in Belgium together. And you know, in some countries, you don't need to register again. If Vitae must register in some other countries because of law, they will do that. तो ये सवाल एक्सेल सर ने मेंडी सर को 2 हफ्ते पहले पूछा था। तो मेंडी सर ने बताया था कि जो देश में वो काम कर रहे हैं, अगर वो देश का अगर ऐसा कोई कानून है कि उधर उनको रजिस्टर होना पड़ेगा, तो वो जरूर होंगे। वो बता रहे हैं कि बेल्जियम की वन ऑफ द टॉप लीगल कंपनी है, जो लॉयर की कंपनी है, उनके साथ उनके कंसल्टेंट है और उनका ये पूरा काम चल रहा है। तो वापस वो कंफर्म करते हैं कि जो बहुत ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं होती है, तो जहाँ पे जरूरी होगा वहाँ पे वो जरूर करेंगे। अगर इंडिया में जरूरत पड़ा, अगर इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क ऐसा बताता है कि उनको रजिस्टर करना जरूरी है, तो वो जरूर रजिस्टर होंगे। यस। Okay, Nitesh is asking, how early and by what procedure can someone withdraw his credits dollars regularly? तो हितेश भाई पूछ रहे हैं कि क्या प्रोसीजर है कि आप अपनी क्रेडिट्स को रेगुलरली विड्रॉ कर सकते हैं। Okay, you can withdraw or you can sell your credits into Vitae, and then you can send your Vitaes to an exchange like Stacks, or there's another one, I forgot the name, and then you can sell your Vitaes into Bitcoin and make it to rupees or US dollar or euro, up to you. You can do that always in real time. देखिए ऐसा है, आपका जो कमीशन है उसको आप जो क्रेडिट्स है, जो डॉलर्स है, उसको आप सेल कर सकते हैं। सेल का मतलब है कि आप उसको वीटे टोकन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बार वीटे टोकन होने के बाद, जैसे एक्सचेंजेस है, स्टैक्स है, इंस्टास्वैप है, ऐसे और भी एक्सचेंजेस है, जहाँ वहाँ पर जाके आप उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट करके आपको जो करेंसी चाहिए, रुपीज़ में चाहिए, इंडियन रुपीज़ में, INR में चाहिए, या USD में चाहिए, US डॉलर्स में चाहिए, या यूरो में, आप अपने अकाउंट में पैसा मंगा सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यस। Okay, then someone is Sunshift Dua is asking if the company completed all legal formalities. If yes, if you can see these documents. Sanjeev, you can go into the web, Google, and search for Vitae AG Switzerland. There you can see the registration number, that the company is legally registered. You can see the management and all these things, that the company is active status and paying tax. एक सतनील का एक सवाल है कि क्या कंपनी ने अपने सब लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर ली है? तो उसका जवाब है कि आप गूगल में एक स्पेसिफिक ये सर्च कीजिए, वीटे एजी स्विट्जरलैंड।
एक बार जब आप ये वीटे स्विट्जरलैंड सर्च करेंगे तो आप स्विट्जरलैंड की अपना गवर्नमेंट साइट पे जाएंगे और वहाँ पे आपको सब डिटेल लीगैलिटी का रजिस्ट्रेशन का मिलेगा, आपको कंपनी के जो ओनर है उसके बारे में डिटेल मिलेगी और जो भी डिटेल और सब जो कंपनी की है वो सब आपके सामने अवेलेबल होगी. यस. Okay, then Rajendra is asking, what is if another company comes with the same kind of business plan or better than this? राजेंद्र जी का सवाल है कि क्या होगा अगर और कोई कंपनी ऐसे ही प्लान लेके आए या इससे अच्छा प्लान लेके आए. Okay, so guys, believe me, it takes years to do the same. Vitae already needed more than 2.5 years to start the beta phase. After public launch, 2-3 years later, we will have already 100 millions of free users, and we are then one of the biggest social media platforms in the world. Nobody can destroy us then. So it doesn't matter anymore if there is someone comes and want to want to copy us, because we are so big then and we are all on the top, and nothing can happen then. तो जैसे इन्होंने आज ही बताया और आप भी जानते हैं कि वीटे को 2 से 2.5 साल लगे अपना पूरा सिस्टम को और सॉफ्टवेयर को सब डेवलप करने में. तो आगे चल के अगर कोई कंपनी कंपटीशन में आएगी तो उसको भी वक्त लगेगा, लेकिन हम 6-7 महीने में पब्लिक लॉन्च में जाएंगे और तभी लाखों की संख्या में हमारे साथ लोग जुड़ने वाले हैं और हम एक बहुत बड़ी सोशल मीडिया कंपनी हो जाएंगे. और ये इतनी बड़ी होने के बाद हमें कोई हिला नहीं सकेगा और हमारी ग्रोथ आगे चल के बढ़ती जाएगी और उन्हें नहीं लगता है कि ऐसे कोई दिक्कत आएगी. इतना इजी नहीं है कंपटीशन को ये सिस्टम और ऐसे स्ट्रक्चर के साथ सामने आना. इतना आसान भी नहीं है, इतना जल्दी भी नहीं आ सकेंगे. यस. Okay, then is someone who is asking, there is rain chat connected to Vitae, and yeah, okay. एक सवाल है कि कोई रेंज चेक करके कोई वीटे के साथ जुड़ी हुई है कि नहीं. So let me explain. There's one guy in the US, his name is Michael Weber. Michael Weber, he had the idea of Vitae, but Mandy and Schrage, the technical director, they overtake the idea and they build it Vitae. Michael Weber is not Vitae. Michael Weber is a guy who launched a project in the US that calls Rain Chat or something like this. And guys, from my side, this is not Vitae. Vitae is not responsible for this. I only can warn everyone to invest in this, because this looks really not serious. And this has nothing to do with Vitae. Michael Weber is not Vitae. He had the idea, but again, Mandy and Schrage, they overtake the idea and they build it Vitae. देखिए, ऐसे है कि एक व्यक्ति है यूएस में जिनका नाम माइकल वेबर है. वीटे की पहले उनकी आइडिया थी, लेकिन वो आइडिया पे आगे चल के वो काम नहीं कर सके थे. तो कंपनी के जो टेक्निकल डायरेक्टर है मिस्टर श्रागे है और मैंडी सर है, उन्होंने ये पूरी सिस्टम को साथ में टेक ओवर कर लिया और ले लिया है. तो मैं आपको वार्न करूंगा कि अगर ऐसा कुछ चीज़ आपके सामने आता है, कोई रेंज चेक जैसा कुछ अलग चीज़ आपके सामने आती है, तो उससे वीटे को कुछ लेना देना नहीं है. और अभी वीटे पूरी हमारी कंपनी की है और हमारी तरफ से पूरा डेवलपमेंट हुआ है. यस. So then someone with the name PK is asking how to generate, okay, this is not a good English. How does the company generate with $12, he mean 20 units per day, $12, to $6,880. He say it looks for him like a money rotation system. एक दिन का सवाल है, शायद उनका नाम पीके है, कि जैसे वो $12 से जो दिन के आप टोकन ले सकते हैं, उससे $6,880 की इनकम कैसे आ सकती है. तो उनको ऐसा लगता है कि ये कोई तो मनी रोटेशन जैसा कोई सिस्टम है. यस. Okay, again, the people are buying a product. The product is a unit with 150 likes. It's a digital product, but it's a product. देखिए, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम जो 20 यूनिट लेते हैं वो एक प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है. हर यूनिट के साथ 150 लाइक जुड़ी हुई है और ये डिजिटल प्रोडक्ट लाइक्स को हम बाय कर रहे हैं. This product will be filled
with other products, units. Units is a product. And because of this, he will earn step by step $344 per ये जो unit. प्रोडक्ट है जो लाइक्स है, ये प्रोडक्ट और सब प्रोडक्ट के साथ फिल होती है, डिजिटल प्रोडक्ट के साथ। तो ये इसी कारण ये प्रोडक्ट्स से फिल होती है और ऐसा सिस्टम चल रहा है। यस। So you must understand that some companies, they working in network marketing with cosmetic, some companies with a crypto coin, some company with a nutrition. We have some companies with e-learning products. We have a unit. This is also a product, and this is regulated, and we have a license from Switzerland. It's a product, and because of the product, you can earn commission from other products. So it's not a money rotation system by law. जैसे आप जानते हैं कि और भी जो कंपनियां होती है जिनका प्रोडक्ट जैसे कॉस्मेटिक होता है, फिर न्यूट्रिशन होता है, अभी बहुत क्रिप्टो करेंसी वाला भी प्रोडक्ट आ गया है जो एक डिजिटल प्रोडक्ट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो लाइक्स यूनिट है वो एक डिजिटल प्रोडक्ट है। ये डिजिटल प्रोडक्ट के हिसाब से हम रजिस्टर हुए स्विट्ज़रलैंड में, हम लीगली ये प्रोडक्ट के साथ रजिस्टर हुए हैं और हमारे साथ जो नीचे लोग लाइक्स का जो प्रोडक्ट लेते हैं उससे हमें इनकम आती है और कम्प्लीटली लीगल है और इसके बारे में हमने रजिस्ट्रेशन भी लिया है स्विट्ज़रलैंड में, तो कोई दिक्कत नहीं है। यस। Okay, Ashok is asking, what if Facebook also starts with sharing revenues? It really doesn't matter what Facebook or other platforms are doing, because we are the first platform in the world who are working on the solidarity principle, on the solidarity community, so that we give all the money back to the users. And again, it takes years for other social media platforms or other companies to copy our system. I think this is my personal, what I think about this. I think we will have, after 2 or 3 years, more than 500, 600, maybe 700 millions of users. This will go really viral. So, and then we are so big, nobody can do something against us. And it really doesn't matter if some people copy some things or not. अशोक भाई का सवाल है कि क्या होगा अगर आगे चल के फेसबुक भी अपना रेवेन्यू शेयर करना शुरू कर देवे। तो उसका जवाब है कि देखिए फेसबुक कर सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन जो सॉलिडेरिटी के प्रिंसिपल पे हमारी जो कंपनी चालू हुई है और जो पूरा रेवेन्यू शेयर जो देने वाली है वो शायद और कोई नहीं कर सकेंगे। और जैसे पब्लिक लॉन्च के बाद मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग हमारे साथ जब जुड़ जाएंगे तो हम फिर इतने बड़े हो जाएंगे कि हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि और क्या कर रहा है। हमारे जितना रेवेन्यू शेयर कोई कर ही नहीं सकेगा। Sir, can I add one thing here? I'll take your permission that Facebook is a listed company and it has actually Mark Zuckerberg has to work for his shareholders. Yeah. So it cannot distribute 78% to all and sundry. It will Yes. not happen. It cannot happen. Yeah, right. Can you say this in Hindi? Yeah. देखिए इसमें ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि फेसबुक एक लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में अमेरिका में, और कोई भी लिस्टेड कंपनी के बारे में हम जानते हैं कि वो सबसे पहले अपने शेयर होल्डर के लिए ही काम कर रहा है। मतलब आप ऐसा मान के चले कि मार्क ज़करबर्ग खुद के लिए काम नहीं करता है, उसके शेयर होल्डर के लिए काम करता है और उसे दिखाना पड़ता है शेयर होल्डर को कि हमारी इनकम इतनी बढ़ते जाएगी नहीं तो उसके शेयर के भाव गिर जाएंगे। तो कोई भी लिस्टेड कंपनी शेयर होल्डर के लिए काम करता है, आम लोगों के लिए काम नहीं करता है। हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो आम लोगों के लिए, आपके और मेरे लिए काम करती है और आपका और मेरे साथ वो इनकम शेयर करने वाली है, जो शायद फेसबुक कभी नहीं कर पाएगा, चाहे तो भी नहीं कर पाएगा। यस, थैंक यू सर। Okay, then someone is asking, what is after public launch? Will be Vitae something like Facebook as a shareholder stock market company? And I said no, and I tell you why. Because if you give the power to other people, they can change it. And many don't want to give the power to other people because he don't want investors or other people in the company who can change the plan. इससे जुड़ता एक सवाल है, एक जन ने पूछा है कि आगे चल के क्या क्या विटे भी फेसबुक के जैसे एक लिस्टेड कंपनी होगी और उसके भी शेयर होल्डर्स होंगे। तो उसका सीधा जवाब है कि मेंडी सर को ऐसा नहीं चाहिए। मेंडी सर को चाहिए कि पावर लोगों के पास रहे और ऐसा नहीं हो कि कोई इन्वेस्टर आ जाए और इन्वेस्टर लोग के पास पावर हो जाए और फिर वो इन्वेस्टर आगे उसका डिसाइड करे कि आगे कंपनी का क्या होगा और कैसे बढ़ेगी और क्या करना है। तो मेंडी सर इसके लिए कभी इसके बारे में पैसे नहीं लेंगे कोई इन्वेस्टर से,
और हर बार कंट्रोल आम लोगों में आपके और मेरे पास रखेंगे, हालांकि कोई इन्वेस्टर जो अपने स्वार्थ के लिए आगे वीटे को चलाए. Yes. And then there's a question where someone is asking, can it be, or why is there guarantee that Mandy will not sell Vitae later to Facebook or something like this? एक सवाल आया कि क्या ऐसी कोई गारंटी है कि मेंडी सर आगे फेसबुक को वीटे नहीं बेच देंगे? So it's a good question. I also asked this question before to Mandy, and Mandy said to me, look, it's not only the money. He say, when Vitae is successful, really successful in 1 or 2 years, it's a multi-billion-dollar company. So he said to me, Axel, yes, I want to earn money, he said, but I have my vision, and my vision is growing global prosperity. And when I sell Vitae to Facebook, they will take the money for themselves, so they will change it. That's why it's more. Mandy is. He's a businessman, but he's also a very religious person, and he has really the vision of growing global prosperity. It's not his vision that everyone will be a multimillionaire later. Yes, some people, of course, but his vision is, and this is much more bigger than network marketing. Let's think about the poor people in India, in the Philippines, the whole African continent. This is his vision to give people a better life. देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल मैंने भी मेंडी सर को पूछा था, तो मेंडी सर ने बताया था कि देखिए, मैं सिर्फ ये कंपनी को चलाने का मेरा एक ही मकसद नहीं है कि मुझे पैसे कमाना है, मुझे जरूर पैसे कमाना है, पैसे क्यों नहीं कमाना है, लेकिन 1-2 साल बाद ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी हो जाएगी, multi-billion dollar कंपनी हो जाएगी और ये होने के बाद हम बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं भूलूंगा पैसे कमाने के बाद भी कि मेरा विजन है कि मुझे ग्रोइंग ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी चाहिए. मेंडी सर बहुत रिलीजियस है, बहुत स्पिरिचुअल है और उन्हें चाहिए कि आम आदमी एक जनता को इंडिया में हो, कोई फिलीपींस में हो या अफ्रीका में हो, जो गरीब है, मेंडी सर को उनको हाथ में एक इनकम कमाने के जरिया बनाना है वीटे को, और चाहे कि ये लोग अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको और बढ़िया कर सके. अगर ये कंपनी, फेसबुक जैसी कंपनी को अगर वो बेच देंगे, तो वो जो कंपनियां जो खरीदेंगी वो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी प्रॉफिट के लिए काम करेंगी, हालांकि लोगों के लिए, आम जनता के लिए तो ये ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका विजन नहीं है और वो अपने विजन पे कायम रहेंगे कि और उन्होंने कंपनी इसलिए शुरू की है कि एक आम आदमी अपना जीवन का स्तर बढ़ाए और ज़्यादा इनकम कमाए. हमारी कंपनी में बहुत कुछ लोग मल्टी मिलियनर्स होंगे, बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे, लेकिन जैसे आपको बताया कि 100% लोग एक्टिव रहेंगे, तो आगे चल के जितने लोग आएंगे सब एक अच्छी इनकम कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे. यस. Okay, so and at this, because we finish in 5 minutes, at the end I will tell you something from my side how I see Vitae. तो अभी जैसे काफी टाइम हो गया, तो मैं 5 मिनट में बताता हूँ कि मैं वीटे को कैसे देख रहा हूँ. Look, I'm since more than 28 years now in the network marketing industry. In the beginning, not successful, but the last 20 years, very, very successful. I built more than 350,000 people in the industry. I earned millions of US dollar, but I stopped working in the regular network marketing industry and I joined Vitae because I believe in the vision of Vitae, that I believe in the idea of growing global prosperity. I really believe this is much more bigger than a normal MLM system. देखिए, मैं मेरे बारे में आपसे शेयर करता हूँ कि मैं 28 साल से ये इंडस्ट्री में रहा हूँ. शुरुआत में मैं बहुत सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन आगे चल के स्पेशली कुछ और अभी के सालों में मैं बहुत सक्सेसफुल रहा हूँ. मैंने बहुत बड़ी टीम्स को बिल्ड किया है. 3.5 लाख से ज़्यादा लोग मेरी टीम में रहे हैं और मैंने मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स भी कमाया है. लेकिन मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं कोई रेगुलर जो कंपनीज है उसमें मैं काम नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद जो कंपनी का वीटे का विजन है, वो विजन के कारण मैं जुड़ा हूँ, जो ग्रोइंग ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी है, और मुझे ऐसी आशा है और विश्वास है
कि ये विजन बहुत बहुत बढ़िया है और ये हमारी इंडस्ट्री को ही नहीं दुनिया में बहुत सारे चेंजेस ला सकती है, और इसलिए मैं ये विजन को मुझे भरोसा है और ये विजन के लिए मैं इधर काम कर रहा हूँ. Yes. Look, in every network marketing company worldwide, doesn't matter if it's a illegal or legal system, if it's product based, if it's like don't know, maybe Forever Living Products, or Jeunesse, or the Indian, Alex, what was the Indian company here, the very famous Vestige. Vestige, for example, Yes, or other companies. So many. You have, if you are involved in network marketing, what is your job? You have to find new networkers. You have to build your business forever. The difference in Vitae is, in the next months, we are doing network marketing, but after public launch, everything will change. देखिए, जैसे हम जानते हैं कि हम कोई भी वर्ल्ड में किसी भी जगह पर अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग को पकड़े, वो जो प्रोडक्ट बेस हो या अपना डिजिटल बेस हो, या वो लीगल हो या इवन इलीगल हो, जैसे प्रोडक्ट बेस कंपनी है जैसे FLP है, जूनेस है, इंडिया की कंपनी है जैसे वेस्टीज है, हम सब जानते हैं कि ये जो भी कंपनी में हम या आप काम करेंगे तो हमें कंटिन्यूस नए लोगों को जुड़ना पड़ेगा, हम रुक नहीं सकते. हम नए लोग आएंगे, जुने होंगे, छोड़ के जाएंगे, वापस हमें नए लोग को जुड़ना पड़ेगा और ये साइकिल चलते रहेगा. तो ये हम कभी भी ये सब कंपनी में काम करना हम बंद नहीं कर सकते. और लेकिन वीटे एक ऐसी कंपनी है जो एक बार पब्लिक लॉन्च होगा तो उसके बाद जो इसका जो ग्रोथ होगा और जो 100% जो लोग एक्टिव रहेंगे, तो हम यहाँ पे आशा कर सकते हैं कि एक स्टेज के बाद हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा ग्रोथ दिन प्रतिदिन, महीने प्रतिदिन बढ़ते ही जाएगा. Yes. So, and what will happen after public launch? We will not have I think later only 3% are networkers. They're coming the normal companies with fan pages like, or football, cricket, they make a fan page, they invite their fans to Vitae, and all the fans, they get a unit for free. Was heißt den Verein? Who is the club, the cricket club or the football club. Also, when they're not good clubs, when they have only 50,000 or 100,000 fans, they're earning a lot of money, so they can buy better cricket players. The barber shop, the normal shops, the poor person in Africa who has nothing, no food but a smartphone, can join, and he can take care of his family. He can buy food from the $344. So the big difference here, Vitae is for everything. It's not only for the networkers. देखिए, हमें एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जब एक बार पब्लिक लॉन्च होगा तो हमारी कंपनी में नेटवर्क मार्केटर सिर्फ 3% जितने ही रह जाएंगे, जो और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं हो सकते, जहाँ पे मतलब 100% लोग नेटवर्कर्स ही होते हैं. लेकिन हमारी कंपनी में जैसे ग्रोथ आएगा तो आगे चल के जो फ्री यूजर्स भी आएंगे. आपको एक उदाहरण देता हूँ कि समझो इंडिया में एक क्रिकेट क्लब है और क्रिकेट क्लब में 200-300 मेंबर्स है. तो अगर वो क्रिकेट क्लब वाले अपने 200-300 मेंबर्स को जुड़ा देते हैं तो क्लब को पैसा आना शुरू हो जाएगा और वो क्लब वो पैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए, अच्छे काम के लिए, अपना क्लब को बढ़ाने के लिए और अपने मेंबर्स के लिए फैसिलिटीज देने में यूज़ कर सकती है. तो जैसे कोई शॉप है, जनरल स्टोर है और वो अपने कस्टमर भेजे, उनके पास 100-200-500 लोग का, तो उनको वो फ्री का लिंक दे सकती है. और हर व्यक्ति इंडिया में, अफ्रीका में जिसके पास एक मोबाइल फ़ोन भी है, तो वो अपना रजिस्टर कर सकता है. उसको $344 मिलेगा. $344 जो ₹25,000 कोई छोटी रकम नहीं है, और वो अपने घर चलाने के लिए यूज़ कर सकता है और आगे चल के फ्री यूजर्स को और लोग को भी जोड़ सकता है और उसकी आमदनी से चलती रहेगी. तो वीटे एक नॉर्मल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है और आगे चल के बहुत सारी चीजें सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं है लेकिन दुनिया भर में लाएगी. यस. So that means ask yourself, what will happen after public launch when people not have to believe, when they see, oh, I earn money every day, every minute, I can buy food for my family. And now not talk about only India, think about Africa, 100 million of people. Think about
China, 1.4 billion people. Philippines, Southeast Asia, Latin American market, the whole world. There's so, you know, more than 35% of the people, billions, we're talking about billions, people in the world, they have less than $3 per day for living. What do you think, what they are doing when they see, oh, I only join by free and I can take care of my family better. This will be really viral. They're coming 100 millions of people. I personally believe in a couple of years, we have over 1 billion people in Vitae. So yes, Vitae is really so different from other network marketing companies. And if you understand this, then of course, buy 20 units per day, bring other members to Vitae, and you will never, ever have to join with another company again in your life, because Vitae, I will give you my guarantee for this, Vitae will stay forever. देखिए, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि आप सोचिए कि पब्लिक लॉन्च के बाद क्या होगा। पब्लिक लॉन्च के बाद मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करता हूँ, अफ्रीका का देखिए, लैटिन अमेरिका देखिए, साउथ ईस्ट एशिया को देखिए, चाइना को देखिए, जहाँ पे 1.4 बिलियन लोग हैं। ये सब देश में अगर सबका हम एक अनुमान लगाए तो वर्ल्ड का 35% ऐसा पॉपुलेशन है जो $3 से दिन का कम कमा रहा है। तो इतनी छोटी इनकम है। आप सोचिए कि इन सब देशों में जो बिलियंस ऑफ लोग हैं, मैं बिलियंस की बात करता हूँ, बिलियंस ऑफ लोग को जब पता चलेगा कि मैं एक जगह फ्री में रजिस्टर होके मुझे $344 होगा और इसके बारे में मैं अगर बात करना शुरू करूंगा तो लोग भी फ्री में जुड़ेंगे और मुझे भी और ज्यादा आमदनी होगी और उनको भी आमदनी होगी। तो आपको क्या लगता है क्या होगा? तो ये पूरा एक मतलब बहुत बड़ा एक वेव आने वाला है, वर्ल्ड वाइड आएगा। और मेरा ऐसा अनुमान है कि अगले 2 साल में 1 बिलियन से ज्यादा लोग वीटे के साथ जुड़ गए होंगे और सबको एक अच्छी आमदनी आना शुरू हो जाएगी। इसलिए वो वापस वो रिपीट करते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हम अभी से 20 टोकन लेना शुरू रखें, हर बार शुरू रखें और हम बहुत सारी जब से फ्री यूजर्स आएंगे तो हम बहुत सारी इनकम हम लोग कमाएंगे, क्योंकि हम लोग सब फाउंडर मेंबर्स हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और एक विश्व भर में एक हम बोल सकते हैं कि भूचाल आने वाला है और बिलियंस ऑफ लोग हमारी कंपनी को जुड़ेंगी। और मेरा खुद का एक्सेलर का खुद का ये विश्वास है कि वीटे जो लाइफ टाइम तक रहेगी और एक बार पब्लिक लॉन्च के बाद आपको कभी और कोई कंपनी को जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि आपकी इनकम कहाँ से आएगी। आप बराबर पैसा कमाते रहेंगे, लाइफ टाइम तक कमाते रहेंगे, कोई कंपनी दूसरी आपको दिखनी नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट और सब कंपनी के लोग आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। यस सर। Okay, this is what I want to say at the end so that you understand a little bit more what is Vitae about. I know we have already more than 50 open questions, but we are now more than 1.5 hours in the meeting here, and I have to go into my next meeting with my German team. So we do that next week again, and then we will answer more questions, okay? तो ये चीज़ मुझे आपके साथ शेयर करना था। अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी भी अबाउट 50 सवाल और है, तो लेकिन अभी हमने 1.5 घंटा अभी डिस्कशन किया है, तो मुझे अपनी जर्मन मीटिंग में जाना मुझे ज़रूरी है। तो मैं फिर अगले हफ्ते आऊँगा और फिर हम वापस ये सवाल जवाब शुरू रखेंगे। थैंक यू। Okay, thank you too, and I wish you from my side a good evening. Excellent, sir. Thank you on behalf of Vitae India. This time we had a marathon session of 1.5 hours. Thanks a lot, and thanks a lot, Excel sir. Alex sir also. Thank you very much. See you all very soon in the next meetings. Have a good evening. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you. Bye.